Hi, this is Dipanshu Agarwal. I'll be recording this session on HCF and LCM. Okay. I'll be recording this session half in English and half in Hindi so that the fluency of both the languages is seen. All right. Okay. So, first of all, the full forms. HCF stands for highest common factor. LCM stands for lowest common multiple, as we all know since school, right? So first, we'll go to the method that we used first in our school, the most traditional method that we used in the school for the first time, right? To calculate the HCF and LCM. So suppose there are two numbers, 60 and 72, right? And we have to calculate the HCF and LCM of these two numbers. Okay. So what was the first step that comes to your mind while seeing these two numbers? And if you have to calculate the HCF or the LCM. Okay. If you don't remember, let me remind you, we used to prime factorize these numbers, right? Remember, we used to make some diagrams, make some take some steps like this. We used to divide it by 2, it comes out to be 30, then again by 2, and so on, right? I hope that you remember this method. Okay, I'll not go into this method, prime factorization. I'll quickly write the prime factorization of 60 and 72. So 60 can be written as 2 into 2 into 3 into 5, and 72 can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 3, right? So this was the first step that we used to do for calculating the HCF and LCM, right? The next step was, we used to take the common part, right? And we used to circle them simply. So this was 2, 2 and 3, right? So now remember, you remember that what this red part was called, the common part? Was it the HCF or the LCM? Okay. So I hope that you remember that this was the HCF. The common part from the prime factorization of 60 and 72 would be the HCF of 60 and 72. This would be 2 into 2 into 3, that is 12. Right. Now, what we used to do for the LCM? For the LCM, we used to take the common part once. We used to take the common part once and the uncommon part also once. What is the uncommon part? In 60, it is 5, and in 72, it is 2 into 3, that is 6. So we used to take the common part once, that means the HCF once, and then the uncommon parts from both the numbers. So LCM of 60 and 72 would be 360. Okay. This was the method that we used to use for the first time while calculating the HCF and LCM, right? Now coming to the aptitude part of the LCM and HCF, right? So suppose, see, this was the method that we used in school, correct? Now, suppose there are two numbers, A and B. There are two numbers randomly. We can assume any two numbers, A and B. Okay. And their HCF is H. Their HCF is H. Right. So now, can I write this A as P into, sorry.
Can I write this A as H into P and B as H into Q? Now, compare it with this example. Compare the right side with the left side. If we take two numbers as 60 and 72, right? If we take two numbers as 60 and 72, that we have taken here as A and B, all right? So can I write 60 as 12 into 5 HP form, right? And can I write 72 as 12 into 6 HQ, right? I hope you are able to compare the right side with the left side, okay? So if A is equal to 60 and B is equal to 72 and the HCF is 12, so I can write A as 60, A as 12 into 5 and B as 12 into 6, right? I can do that. Okay. So comparing with the left side, can you guess what would be the LCM of these two numbers, A and B? Okay, you have to compare everything with the left hand side and tell me what is the LCM of these two numbers, A and B. Okay, so let me tell you, the LCM would be, if you have guessed it, then it's very good. If you have not, I'll let you know. So LCM would be the common part ones. This was the common part, and the uncommon part ones. So here I'll write P into Q. So if we compare it with the left hand side, so P would be 5 and Q would be 6. I hope this is clear. Okay. Okay. So LCM of these two numbers, A and B, is H into P into Q, where H is the common part in A and B, and P and Q are the uncommon part. Okay. All right. Now let me switch to Hindi. Okay. ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि P और Q क्या कोई भी नंबर हो सकते हैं, या फिर P और Q में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगी? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करें तो हमारा H है 12, P है 5 और Q है 6, राइट? अब ध्यान से देख के मुझे ये बताइए कि क्या P और Q की कोई एक अलग प्रॉपर्टी होगी, या फिर P और Q कोई भी नंबर्स हो सकते हैं? ओके, लेट मी हेल्प. क्या P की वैल्यू, जैसे यहाँ पे P मैं यहाँ पे लिख देता हूं. ओके, तो क्या P की वैल्यू 10 हो सकती थी? 5 की जगह 10 हो सकती थी? क्या P की वैल्यू 5 की जगह 5 इंटू 2 10 हो सकती थी? नहीं. P की वैल्यू 10 और Q की वैल्यू 6 नहीं हो सकती. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर P की वैल्यू 5 होती है, सॉरी, P की वैल्यू 10 होती है और Q की वैल्यू 6 होती है, तो 6 को फर्दर हम रिजॉल्व कर सकते हैं 3 इंटू 2 में, और ये जो 2 है वो चला जाएगा HCF में. क्लियर? तो अगर Q की वैल्यू 6 है तो P की वैल्यू 10 नहीं हो सकती. ठीक है, तो यहां से आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि एक प्रॉपर्टी P और Q फॉलो करेंगे कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता.
P and Q cannot have common factor except वन. ऑब्वियसली वन तो हर नंबर का फैक्टर, हर नेचुरल नंबर का फैक्टर होता ही है, राइट. तो मैंने ये बताया, एक बार मैं रिपीट करता हूं कि अगर ए की वैल्यू एच पी है, बी की वैल्यू एच क्यू है और एच अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी कॉमन फैक्टर था बड़े से बड़ा, जो भी कॉमन फैक्टर था बड़े से बड़ा, वो हम H में एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं. क्लियर? तो P और Q में अब फर्दर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. ठीक है? I'll just erase this. ओके. तो ये इस चैप्टर की अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि P एंड Q कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन. राइट. सो आई होप कि तुम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर पा रहे हैं. राइट. ओके. तो हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन पे. आई होप कि अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपने नोट कर लिए हैं या फिर दिमाग में रख लिए हैं. ठीक है. सो आई विल गो टू अ क्वेश्चन. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके. So I'll go to a question. Question is, the sum of two numbers is 96 and the HCF of those two numbers is 6. So we have to find the possible pairs. Right. So I have written this question in short, that the sum of two numbers is 96 and HCF of those two numbers is 6. So we have to find the possible pairs. That means we have to find that how many and what are those possible pairs who have the sum as 96 and HCF is 6. Right. Okay. So how to do this question? We'll use this method, we will use this technique that we have just learned to solve this question. Right. So let's assume those two numbers are A and B. Okay. Let's assume those two numbers are A and B. So according to this question, A plus B is equal to 96. Right. And HCF of these two numbers is 6. Okay. So can I resolve A and B in HP and HQ? Obviously, we can. So we can write HP plus HQ is equal to 96, where the value of H we have been given as 6. तो यहाँ पे H की वैल्यू 6 है, that means 6P plus 6Q will be equal to 96. P plus Q will be equal to 96 by 6, that is 16. Okay. तो दो नंबर्स मैंने अज्यूम किए थे A and B, एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं P plus Q इक्वल टू 16 पे. अब मुझे ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनका सम 16 हो. ठीक है. वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल पेयर्स. तो ऐसे दो नंबर्स जिनका की सम 16 है मैं लिस्ट करता हूं. तो ऐसे दो नंबर्स जिनका की सम 16 है हो जाएंगे 1,15, 2,14
3,13, 4,12, ठीक। इसके बाद आएगा 5,11, 6,10, 7,9 and 8,8, राइट। नाउ P और Q की वैल्यू हमारे ये पेयर्स आ गए हैं, 8 पेयर्स ऐसे आ गए हैं जो P और Q को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जो मैंने बताया था कि एक ऐसी लाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, राइट। तो P और Q की जो इनवैलिड वैल्यूज है यहां पे से, उनको हम हटा देंगे। तो 2 and 14 हट जाएगा बिकॉज इनमें कॉमन फैक्टर है। 4 and 12 हट जाएगा, 6 and 10 हट जाएगा, 8 and 8 हट जाएगा। So we are left with 4 pairs, 1,15, 5,11, 3,13 and 7,9। तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास 4 ऐसे पेयर्स होंगे जिनका की सम होगा 96, HCF होगा 6। बट अभी भी हम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे हैं, राइट। फाइनल आंसर कैसे आएगा? देखिए, फाइनल आंसर पे इसलिए नहीं पहुंचे हैं क्योंकि हमने जो वैल्यूज डिटरमाइन की हैं, जो एक्सट्रैक्ट की हैं, वो हैं P और Q के करस्पॉन्डिंग। लेकिन जो हमने दो नंबर्स अज्यूम किए थे, ऐसे दो नंबर्स जिनका कि सम 96 है और HCF 6 है, वो हमने अज्यूम किए थे A और B, राइट। तो अगर ये सब P और Q की वैल्यूज हैं, ये सब P और Q की वैल्यूज हैं, तो इनसे मुझे A और B की वैल्यूज चाहिए, करेक्ट। तो कैसे मिलेंगी? ये मिलेंगी 6 से मल्टीप्लाई करके, करेक्ट। ओके, सो इन सारे पेयर्स को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पेयर्स आएंगे 6,90, देन 30,60, 30,66, then 18,78 and 42,54। आप देख सकते हैं इसमें से किसी भी पेयर को उठा के तो उनका सम आएगा 96, HCF आएगा 6, करेक्ट। ओके, तो इस प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अभी ये सिर्फ डेमो वीडियो है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई होप ये क्वेश्चन और ये मेथड्स आप लोगों को समझ आए होंगे, ठीक है। ओके, so thank you, this video, I'm ending this video now, okay, thank you।